Welcome to Sharad B. Mohan Polanga lecture. Good evening, student. Now, student, you are familiar how to find out the any terms using the formula. And using the formula, we have found the 19th term in question number 4. Now we have to start the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को स्टार्ट करना है of the practice set 3.2. Now see the question of arithmetic progression which is asked in the question number 5. Find the 27th term of the following AP. So here we have to find out the 27th term of AP and the list is given. Arithmetic progressions list is given as 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11. So here the a value is 9 and we will calculate the common difference. So 4 minus 9 is equals to minus 5. So here difference is negative and the first term is a. Now using the a and the common difference and substituting the n is equals to 27, we can calculate the 27 term of this AP. So now let's see the solution. Okay, now see the question. 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11. This is the given AP. Given AP. ये given AP है, arithmetic progression है. So here A is equals to 9. Here A is equals to 9 and D is equals to T2 minus T1. D is equals to T2 minus T1. Now see the first term of AP is called as the first term as int and second term is 4 here. So now T2 is 4 minus 9. 4 minus 9 is equals to 5 and greater number is 9. So this will be minus 5. क्या हो जाएगा? Minus 5. Now we have the two value. Now we have to calculate the T 27th term निकालना है. Now we will use the formula. Tn is equals to a plus n minus 1 bracket close into d. This is the formula. Now see that T27. Now wherever there is n, that will be replaced by the 27. So therefore this is equals to T27. Now a is equals to 9 plus now n is equals 27 minus 1 into d is minus 5. Here we will write the substituting values. यहाँ क्या लिखेंगे? Substituting values. फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हम लोगों ने फॉर्मूला, सेकंड में क्या लिखा? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज. नाउ वी विल सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व करेंगे. तो देयरफॉर T27 is equals to 9 plus 27 minus 1 is equals to 26 into minus 5. So this is equals to 9. Now multiply 26 by the 5. So 5 6 are 30. Carry 3. 5 2s are 10. 10 and 3 13. And one number is negative, one is positive. So this would be minus 130. Now see
9 is positive and 130 is negative, so one number is positive and one is negative, so that's why this will get subtracted. The 9 will get subtracted from 130. The 130 minus 9 is equals to 121, and greater number is 130 before there is a negative sign, so this will be minus 121. क्या हो जाएगा? Minus 121. Now write down the answer. The 27th term of AP is minus 121. 27th term AP का क्या है? 121 है, नेगेटिव 121. Okay, now see the question number 6. Question number 6 is find how many 3-digit numbers are divisible by 5. इसमें क्या बोला है? Find how many 3-digit number natural number are divisible by 5. हम लोगों को ऐसे numbers फाइंड आउट करने हैं कितने ऐसे नंबर्स है दो 3 डिजिट के हैं और वो डिविजिबल भी किससे है? 5 से. तो नाउ वी नो दैट द 3-डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 100. 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से. कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से. तो पूछा क्या है? फाइंड हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5. फाइंड आउट करो कि कितने 3 डिजिट के नंबर है जो वो 5 से भी डिविजिबल है. तो 3-डिजिट नंबर्स आर फिक्स्ड. 3 डिजिट का नंबर्स क्या है? फिक्स्ड है ना. कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से. और एंड कहाँ पे होता है? 999. तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि 1100 से लेकर 999 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, the 3 digit number are now 100, 101, 102 to 999. यही है 3 डिजिट के नंबर. कहाँ से स्टार्ट हुए? 100 से. और एंड कहाँ पे हो रहा है? 999 पे. बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5. the list of numbers which are divisible by 5. लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर. एक क्या हो गया? वर्ड मिस हो गया है. लिस्ट ऑफ 3 डिजिट numbers which are divisible by 5. So now see the first number which is 3 digit is 100, and this is divisible by 5. So that's why the first number is 100. Now 101 is not divisible by 5. 102 is not divisible by 5. 103, 104. These numbers are not divisible by 5. Now 105 मतलब कितना? 105. This is the second number which will be the 3 digit as well as divisible by 5. ये second number होगा. After that 110 will be the 3 digit as well as divisible by 5, and next one 115 and so on. Now when we check the 999, so this 999 is not divisible by 5. Before that 998, so this 998 is also not divisible by 5. And previous of the 998, 997, this is also not divisible by 5, and 996 is also not divisible by 5. So last number that will be divisible by 5 is 995. लास्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? 995. वो लास्ट नंबर है इस लिस्ट का जो 5 से डिवाइड होता है. अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने हैं? ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं और 3 डिजिट के भी है. तो हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द नंबर्स इन द गिवन लिस्ट,
you will find that the difference is 5. So that's why this is the AP. This is इन AP. अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करके डिसाइड नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, दिस इज इन AP. Why? Because the next number is 105 and next to next is 110 and next to next is 115. So every time here the number 5 as a difference you will get. आपको क्या मिलेगा, 5 हमेशा यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा. तो दिस इज इन AP, दैट्स व्हाई दिस इज इन AP. तो इफ इट इज AP तो देयरफॉर A means first term, A is equals to 100 and D is equals to T2 minus T1. T2 is 105 and T1 is equals to 100. So this is equals to 5. So here A is equals to 100 and D is equals to 5 and Tn. Whenever the last term is known, so that last term is written as Tn and Tn is 995. 995. Now we will write the formula to calculate the terms. So Tn is equals to A plus n minus 1 into D. This is the formula. This is the formula. Now we will substitute the values. Now see, this is the finite list of number. यहाँ पे finite type का list है ये. तो यहाँ पे Tn will be the last term. So now Tn is the 995. A is equals to 100 plus this n we have to find out. N is not known here. So n minus 1 into D. D value is equals to 5. D की value कितनी है, 5. Now bring this 100 on the left hand side. So 995 minus 100. Here what will left, n minus 1 into 5 will left. So we will multiply the n minus 1 with the 5. So 5 into n is equals to 5n and 5 into minus 1 is equals to 5. So therefore 995 minus 100 is equals to 895. Now 5n is equals to minus 5. Now this 5 will come on the left hand side. So this sign will change. So this will become plus 5. Minus 5 will become plus 5 and here 5n will be. So 895 plus 5 is equals to 900. कितना हो जाएगा, 900. 895 plus 5 is equals to 900. So therefore 5n is equals to 900. So that's why n is equals to 900 divided by 5. 5 1 ja 5, 5 1 ja 5. Now remainder is 4. 4 and 0 become 40. 5 8 ja 40 and 5 zeros are 0. So n is equals to 180. Now there are the 180 number which are divisible by 5 and which are the 3 digit. ऐसे 3 डिजिट के 180 नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं. ये क्लियर हो गया. कितने नंबर मिल गए हम लोगों को, 180 टोटल मिल गए. ऐसे नंबर जो क्या है 3 डिजिट के हैं एज वेल एज वो 5 से डिवाइड भी होते हैं. तो नाउ हियर वी विल राइट द आंसर. There are 180. There are 183 digit numbers. There are 183 digit numbers divisible by 5. Full stop. Now see the question number 7. All of you read the question number 7. Now from the formula you understood that to find out any term we should know the A value and D value. वो फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म है, Tn है. Tn तो n should be known and next A should be known and D should be known. So we can calculate any number and out of these three if the two are known so we can calculate the third one. If the A and D is known and Tn, the whole Tn is known, so we can find out the n value. And if n and A is known so we can calculate the D value. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.
Okay, now see the question number 7. Question number 7. The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of the AP. What is given here? 11th term and 21st term of AP are 16 and 29. इनके 11th term का whole value कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो यहाँ पे 16 है, एंड द 21st term आफ्टर द कैलकुलेशन will 29. ओके, एंड देन फाइंड द 41 term ऑफ AP, और उसके बाद में 41 term AP का फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग द एनी टर्म वी शुड नो A एंड D. हम लोगों को क्या चाहिए? A और D की वैल्यू चाहिए. तो हियर लिस्ट इज नॉट गिवन, लिस्ट इज नॉट गिवन. इफ लिस्ट इज गिवन देन, अगर लिस्ट इज दिया होता तो क्या होता? फ्रॉम द लिस्ट वी कैन find out the A as well as D, but here list is not given. So first we have to calculate N and D by making the linear equation in two variables. Okay, now let's see the solution of question number 7 कि कैसे solve करेंगे. 7 का solution 11th term. 11th term means what? T 11 comma 21st term. 21st term ये वर्ड में लिखा है, तो सिंबॉलिकली दिस विल बी टू T 21st, and we have to find out the 41th term. 21st term is equal, 41th term is equals to T, 41 is equals to question mark. ये क्लियर हो गया? Okay, now see the formula. We know that Tn is equals to A plus in bracket n minus 1 bracket close into D. This is the formula. Okay, now this is the formula, and T 11th value is already given in the question. T 11th value is 16, comma, and T 11th value is equals to 16, comma, and T 21st value is 29. 29 ये गिवन है. ये क्या है? T 11th की वैल्यू कितनी है? 16. 21st टर्म जो है वो कितना है? उसका वैल्यू 29. 16 और 29. क्लियर हो गया? अब देखो, now therefore T11 now n value is known to you, because yes T11 is given, means n value is n is equals to 11. So A plus, now n will be 11 minus 1 into D. Now T11th whole value after calculation is 16. तो 16 Tn की जगह क्या आ जाएगा? 16. A plus, now 10 minus 1 is 11 minus 1 is equals to 10. 10 into D is equals to 10D. अब क्या करेंगे? इसको इन्वर्स कर, इसको रोटेट कर देंगे. देन 1 plus 10D is equals to 16. A plus 10D is equals to 16. This is your equation 1. Okay, now similarly उसी तरीके से क्या होगा? Tn is equals to A plus n minus 1 bracket close into D. This is the formula. ये formula है. तो therefore T21st is will equals to A plus, now n will be 21 minus 1 into D.
So therefore T21st value is 29. So in place of the T21st we will write the 29a plus now 21 minus 1 is equals 20, 20 into d is equals 20d. So finally this will become the 29a plus 20d, and now inverse it, you will get the a plus 20d is equals to 29. This is your equation number 2. Now because here list is not given, so without list, when the two t values are given, so you have to follow these steps to find out the a and d value. a और d वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. इट्स क्लियर नाउ? ये क्लियर हो गया. अब देखो क्या करना है हम लोगों को. ए और डी की वैल्यू नहीं मिली है, दो इक्वेशन बन गया है, बट इन दीज टू इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ द ए का कोएफिशिएंट क्या है, 1 and 1 है, कोएफिशिएंट इज सेम. So we will subtract the one of the equation from the any other equation. Then we will eliminate the a, and if we eliminate the a, we will get the d value. जब a eliminate हो जाएगा तो d की वैल्यू मिल जाएगी. Now therefore subtracting equation 1 from equation 2. Subtracting equation 1 from equation 2. तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो a प्लस 20d इक्वल्स टू 29, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16. नाउ ऑन सब्ट्रैक्शन द साइन विल चेंज. सब्ट्रैक्शन करने से साइन क्या होगा, चेंज होगा ना. सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो दिस इज द प्लस 16, तो दिस विल बिकम माइनस 16. दिस इज प्लस 10d, दिस विल बिकम माइनस 10d, एंड दिस विल बिकम माइनस. Now 29 minus 16 is equals to 13. 9 minus 6 is equals to 3, and 2 minus 1 is equals to 1. 20d minus 10d is equals to 10d. Now greater number is 20. 20 minus 10 is equals to 10. A minus a is equals to 0. So therefore 10d is equals to 13. So therefore d is equals to 13 upon 10. So d is equals to 1.3. डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3 आ गई. ओके, डी की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 1.3. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ए वैल्यू. So to find the a value, we have to substitute the d value in any one of the equation 1 or 2. Substituting the value of d in equation 1. तो a plus 10d मतलब 10 into d is equals to 16. Now d value is 1.3. so therefore this will again get converted into the 13. 1.3 into 10 is equals to 13 is equals to 16. so therefore a is equals to 16 minus 13. क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 minus 13. So therefore a is equals to 16 minus 13 is equals to 3. a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई. a is equals to क्या मिल गया, 3 मिल गया. अब देखो Tn is equals to a plus. तो therefore T41 n की वैल्यू कितनी हो गई, 41. a is equals to 3 plus n is equals to 41 minus 1 into d is equals to 1.3. so this is equals to 3 plus, now 41 minus 1 is equals to 40 into 1.3. 3 plus 41 minus 1 is equals to 40 into 1.3. 40 into 1.3 is equals to 3 zeros are 0, 3 fours are 12, 3 zeros are 0, 3 fours are 12, 1 zeros are 0, 1 fours are 4, 0, 2, 5. Okay, so this will become 40 into 1.3 will become 52.
52 plus 3 is equals to 55. Now write down the answer. Now we have the T41 value is as 55. 55 आ गया उसकी value. Now here we will write down the answer. T41 is equals to 55. Now question number 8. Question number 8 में देखो 11 8 5 2 11 8 5 2. In this AP which term is number minus 151. अब ये AP दिया है, which term is number minus 151. कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 151 होगा, ऐसा पूछा है. तो ये लास्ट टर्म वी विल कंसिडर दिस, इसको लास्ट टर्म कंसिडर कर लेंगे हम लोग. क्या लिस्ट में गिवन है, 11, 8, 5, 2, so on. This is the given AP. गिवन AP है ये. अब पूछा विच टर्म इज माइनस 41. तो Tn इज इक्वल्स टू टेकन एज माइनस 151. हम लोगों को ये निकालना है n की वैल्यू की कौन से पोजीशन पे माइनस 151 आएगा, कौन से पोजीशन पे क्या आएगा, माइनस 151 आएगा. ये solution. Okay, now here you know that a is equals to 11, so therefore d is equals to t2 minus t1. t2 is 8 and t1 is equals to 11, so 8 minus 11 is equals to minus 3. तो क्या मिला आपको, a is equals to 11 and d is equals to minus 3. d की वैल्यू कितनी मिल गई, minus 3 मिल गई. Now we will write the formula. Tn is equals to a plus n minus 1 bracket close into d. So therefore Tn is equals to minus 151. A value is equals to 11 plus n value we have to calculate into d. D is equals to minus 3. D की वैल्यू कितनी है, minus 3 है. So this is equals to minus 151. Now this 11 will come on the left hand side, this will become minus 11. So minus 3 into n is equals to minus 3n and minus 3 into minus 1 is equals to plus 3. So this will become 112, 5 plus 1 6, 162. So this minus minus will become minus 162 and minus 3n. Now bring bring the plus 3 on the left hand side, so this will become minus 3 is equals to minus 3 and so this is equals to 6 plus 2 plus 3 is equals to 5. Minus 165 is equals to minus 3n. So therefore n is equals to minus 165 upon minus 3. So minus 3 will get cancelled. 3 1 ja 3, 3 5 ja 15. Now remainder is 1, 1 and 5 it will become 15, 3 5 ja 15. So n is equals to 55. n की वैल्यू क्या मिल गई है, 55 मिल गई हम लोगों को. कितना मिल गया n की वैल्यू, 55. ओके, नाउ we will write down the answer. The 55th term will be minus 151. मीन्स अगर ये लिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हो, तो अब क्या है यहाँ पे देखो, इस लिस्ट में अगर हम 55 टर्म्स अगर क्या करेंगे, 55 टर्म्स तक जाएंगे, देन वी विल गेट द minus 151. इट्स क्लियर नाउ. The 55th term will be minus 151. Full stop. It's clear now, student? सभी को समझ में आ गया? Now question number 9. कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है. In the natural number from 10 to 250, in the natural number from 10 to 250, how many are divisible by 4? यहाँ पे in natural number from 10 to 250 बोला, from,
तो फ्रॉम मतलब इसको भी कैलकुलेट करेंगे इसमें। अगर इस क्वेश्चन में होता बिटवीन, बिटवीन तो 10 एंड 250 विल नॉट बी टेकन। अगर बिटवीन है तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन फ्रॉम है तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? कितने ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? See the question number 9. Question number 9. In the natural number from 10 to 250, how many are divisible by 4? अब 4 से divisible means what? 4 का multiple कौन कौन सा है? The list of number. So we will prepare the list and then we will write the given list is AP or not AP. Then we will find the A and the value. The list of number. The list of numbers. The list of numbers which is divisible by 4 is. Now see the from 10 to 250. Okay, now 10 is not the 10 not divisible by 10 is not divisible by 4. Next number will be 12. 12 is divisible by 4. Next one is 16 divisible by 4. 20 divisible by 4. 24 is divisible by 4. 12, 16, 20, 24, so on. Now see the 250. Okay, 250. अब 250 4 से divisible है क्या? Let's check it. 4 6 are 24. Now remainder is 1.